Hmm. Yeah, Assalamu alaikum. This is going to be a fairly short video, and in this video, we're going to use modeling to connect our data queries. So let's have a look at what we have here. ये last time हमने यहाँ तक पहुंचे थे. तो now थोड़ा सा विजुअलाइजेशन की तरफ हम आते हैं. अगर मैं एक विजुअल बनाऊँ ना, और इस विजुअल के अंदर if I want to sort of analyze a couple of things. फॉर इंस्टेंस सिटीज का, मतलब स्टेट्स का अगर मैं हिसाब रखना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स को अगर मैं एक्सिस के अंदर लेकर आ रहा हूँ, और इज देयर अ रेवेन्यू फिगर समवेयर, या तो अगर रेवेन्यू को मैं ला रहा हूँ लेजेंड में, तो ये देखिए विजुअल काम नहीं कर रहा. लेट मी जस्ट ट्राई दिस अगेन, बिकॉज दिस शुड रियली वर्क. Revenue in values, sorry, it needs to be in values, and my states need to be in axis. Now I can understand that जो newer version है उसमें things are slightly different. उसमें ये x axis और y axis जो है वो लिखे गए हैं, तो it's बड़ा माइनर सा डिफरेंस है. बट अगर नई वर्जन में भी करेंगे तो आंसर कुछ इसी किस्म का आएगा. एंड यू मस्ट बी वंडरिंग एज व्हाट इज हैपनिंग हियर, बिकॉज रियली इट शुड, द वैल्यूज शुड रियली बी डिफरेंट. बट मैं आपको बता देता हूँ कि हो क्या रहा है. क्योंकि आप ये दो डिफरेंट टेबल्स या दो डिफरेंट क्वेरीज में से डायमेंशन और मेजर को उठा रहे हैं, इस वजह से इट्स नॉट वर्किंग. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट अ मेजर इज. किसी किस्म की भी कैलकुलेशन यानी नंबर जिसके अंदर इन्वॉल्व हो, कैलकुलेशन उसके एग्रीगेशन हो सके, जैसे रेवेन्यू है, सेल्स है, एक्सेट्रा, सारे के सारे हम कहेंगे कि ये मेजर है. एंड डायमेंशन इज सॉर्ट ऑफ a characteristic of your data, which can be quantified using a measure but not without it. तो अगर स्टेट को मैं रेवेन्यू के हिसाब से देखना चाहूँ तो ये काम नहीं कर रहा. उसकी वजह ये है कि दो डिफरेंट टेबल से मैंने लिए. सो यू कैन सी द येलो टिक का एक जो मेरा मैयर है रेवेन्यू का, वो सेल से आ रहा है, और मेरा डायमेंशन जो है वो स्टोर सिटी से आ रहा है. दैट इज प्रिसाइसली व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द टू. So what I have to do is go to my modeling tab and now start making connections. Now remember, अगर आपने settings के अंदर auto detect करवाया हुआ है तो ये auto detect कर जाएगा. Auto detect, I don't like the idea of auto detecting because it can really go awry. So it does not take a lot of time. Therefore, what you can really do is start arranging your tables. Now observe that हमने चूंकि दो टेबल्स रिटायर कर दी हैं, वो यहाँ पर नहीं दिख रहे. हमारे पास चार टेबल्स हैं और मैं उनको नीटली अरेंज करने लगा हूँ, so that I am able to make certain connections. 1 2 3 4, फोर जो है ना मेरे यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं. उसमें अगर आप गौर करें तो मैंने सबसे ऊपर सेल्स के टेबल को रखा है, बिकॉज दैट्स माय मेन सॉर्ट ऑफ क्या कहना चाहिए, मेन यू नो टेबल वेयर द डेटा इज गोइंग टू फ्लो. So now let's have a look at the stores table. तो अगर आप गौर करें कि स्टोर्स टेबल की जो प्राइमरी की है ना, स्टोर आईडी, वो यहाँ पर भी मौजूद है. यानी यहाँ ये यहाँ पे फॉरेन की है. तो व्हाट यू गोइंग टू डू, इसके ये जो मुश्तरका चीजें ना उनको आपने मिलाना है. तो इसको पकड़ के अगर मैं इसके ऊपर ड्रॉप कर दूंगा तो इट्स गोइंग टू मेक अ कनेक्शन. देखिए को बाय द सेम वे यू आर गोइंग टू मेक अ कनेक्शन here. Try to make a connection here. इधर आईडी आपके पास है जी, प्रोडक्ट आईडी, एंड दिस प्रोडक्ट आईडी here as well, and I'm going to drop it right here. So now these two tables will be connected through this. And lastly, what we have here is uh, city ID. Let's see if there is a city ID. There's no city ID here, but there is a store ID here.
and maybe we can connect it through store ID. uh, Store ID किधर चला गया? ये store ID. There you go. So now what we have here is a bit of connection, and I believe कि हमारे चारों tables जो है ना connect हो चुके हैं. And if I go back to my visual, it should work, because sales or store. Let me just go back. Sales and stores. Let me see. This works. ये जो कनेक्शन है इनको आप किसी वक्त भी डिलीट भी कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं. आई वुड जस्ट लाइक टू सी whether it's a, yeah, so store id works fine. And go back here, try to save our file, and refresh our data. And let me see this again. इसको दोबारा देख लेते हैं हम. स्टेट एंड रेवेन्यू. तो स्टेट को मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ. State and revenue, I want to bring in the values. So there you go. Now it's working perfectly well. Uh, but of course, state की abbreviation ये लेकर आ रहा है. If I could just get the state name here. Okay, it's only bringing in the abbreviation, and that is fine too. There you go. So now you're able to connect. Since the connection is there, you're able to make different measures. Of course, now आप अगर अपने और चीजें देखना चाहेंगे तो इस डेटा से देख सकते हैं. Should not really be a problem. For instance, what we can do is also look at price. प्राइस को वैल्यूज में ला रहा हूँ, और मैं सिट्रस को ला सकता हूँ एक्सिस में. एंड देयर यू गो, इट्स वर्किंग pretty well now. So this is how you're going to make the connections. And I know this doesn't look very nice at the moment, but एक इसके बाद अलहदा से वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम विजुअलाइजेशन की बात करेंगे.